is say Henry's law. In Henry's law, we study the effect of pressure on solubility of gases. Gases की solubility पे जो pressure का effect है, उसको हम लोग Henry's law से explain कर सकते हैं. Now, the solubility of any gas in a solution can be expressed by two terms. First one is the mass of the gas dissolved per unit volume of the solution. Means this is what mass of gas is present per unit volume of the solution. यानी किसी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में कितना गैस का मास है वो एक्सप्रेस करेगा सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट वन इज मोल फ्रैक्शन. मींस दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन. So these two terms can explain the solubility of any gas. They express the solubility of gases. Now see the definition of Henry's law in terms of mass. See, mass of gas dissolved per unit volume is directly proportional to applied pressure. यहाँ पे देखिए, mass of the gas dissolved per unit volume is directly proportional to applied pressure. जितना आप pressure apply करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है, mass मिल रहा है गैस का solutions के अंदर. And the mass here expresses solubility. So we can say that solubility of any gas is directly proportional to the applied pressure. This is equal to M is equal to Kp, where K is proportionally constant and is known as Henry's constant. Now see the definition in terms of mole fraction. Mole fraction term में देखिए definition. Partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So here partial pressure ये हम देख रहे हैं क्या? गैस के ऊपर partial pressure लिख रहा है vapor phase में, वो क्या है? Mole fraction के बराबर है. Mole fraction of the gas in the solution. जो solutions के अंदर गैस का mole fraction है, उसके directly proportional है. And the mole fraction क्या शो कर रहा है? It shows the solubility. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि solubility is directly proportional to the applied pressure. Or P is equal to KH into mole fraction, where KH is a proportionality constant known as Henry's law constant. Now see, from this equation, if we plot a graph between the pressure and the mole fraction, pressure और mole fractions के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमें देखिए क्या है कि स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. रीजन क्या है? We see that here the pressure is directly proportional to mole fraction. And the slope अगर हम देखेंगे इसका तो ये आ रहा है क्या? This is KH. Right? Now see the relationship between KH and solubility. Solubility और KH के बीच का रिलेशन क्या है ये देख लीजिए. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर रिलेशन is P is equal to KH into mole fraction. So from here KH this is equal to P upon mole fraction. P here is constant. हम लोग जनरली ये देखते हैं, ये constant pressures पे ये देखते हैं. तो ये देख रहा है क्या हमारे पे? This is KH. It is inversely proportional to mole fraction, and the mole fraction is its solubility. So we can say that here the Henry's law constant is inversely proportional to solubility. So here Henry's law constant is inversely proportional to solubility. It means that the gases having lesser value of KH have higher solubility. ऐसे gases जिनके KH की value कम होती है, उनकी solubility क्या होती है? ज़्यादा होती है. This is an important point. इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा. So here, if we have two gases, argon and carbon dioxide, and its KH value of argon is 40.4, and the KH value of CO2 is 1.67. So if we compare the solubility of these two gases, so we see that carbon dioxide is more soluble than argon because its KH value is lesser. तो इसका मतलब क्या हुआ? The gases having lesser KH value have higher solubility. Now KH is dependent on temperature, which is directly proportional to temperature. देखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर वेरी करेंगे तो KH की वैल्यू भी वेरी करेगी. राइट? नेक्स्ट थिंग, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस. ये गैसेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है? मींस डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा. राइट? नेक्स्ट, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा. तो ये सारे पॉइंट्स KH के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देख रहा है. इन सारे पॉइंट्स को बना के क्वेश्चन बन जाता है. जेईई में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा. इन सारे पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड किया गया है और आपसे पूछा गया है. अब यहाँ पे अगर हम KH के यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ K, दिस इज, यहाँ पे देखिए हमारे पास रिलेशंस क्या था. KH दिस इज इक्वल टू P अपॉन मोल फ्रैक्शन. यूनिट ऑफ प्रेशर अगर हम इसको ATM में ले रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इट इज अ रेशियो, सो इट इज यूनिटलेस. दिस इज यूनिटलेस. सो यूनिट ऑफ KH इज दैट ऑफ प्रेशर. ये प्रेशर की ही यूनिट होगा
जो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट होगी वही केज की भी यूनिट है, राइट. सो दिस इज अबाउट हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड हेनरीज लॉ. नाउ सी सम एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. ये एप्लीकेशंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा. आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो एप्लीकेशंस के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो नेक्स्ट इज applications of Henry's law. See the first application in the production of carbonated beverages means जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डिजोल्व करते हैं किसके अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर. तो in order to increase the solubility of carbon dioxide in the soft drinks and the cold drinks, the bottling is done at high pressure. High pressure पे bottling की जाती है ताकि क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा soluble हो. ठीक. Next is respiratory problem at high altitudes. See, at higher altitudes, we see that there is decrease in pressure, there is lesser atmospheric pressure. And due to decrease in pressure, the volume increases. And since volume increases, so we can say that the availability of oxygen per unit volume also decreases. Oxygen की मात्रा वो कम हो जाएगी per unit volume, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, the respiratory problem आएगी. That is the availability of oxygen for the respiration, it decreases. So we face a respiratory problem. And due to respiratory problem, we see that there is lesser amount of oxygen and lesser amount of oxygen in blood and tissues. Tissues और blood के अंदर oxygen की मात्रा कम होगी. And इसकी वजह से weakness आएगी. और इसी weakness को medical term में हम लोग बोलते हैं क्या, anoxia. So we face anoxia-like problems at higher altitudes. Right. Next is decompression sickness in deep sea divers. Deep divers यानी कि scuba divers. Scuba divers में बहुत common problem है decompression sickness और it is also known as bends. इनको bends भी कहते हैं. Now see here, underwater पानी के अंदर क्या होता है, pressure बढ़ेगा. जैसे जैसे scuba divers नीचे जाएंगे, underwater there is increase in pressure and due to increase in pressure, solubility also increases. तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, their solubility also increases, right? So see that here in the concentration or the percentage of blood or the solubility of nitrogen oxygen in the blood and the tissues, it also increases. Blood के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन की solubility बढ़ेगी. लेकिन जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे हम लोग, सरफेस पे आने पे क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा. प्रेशर डिक्रीज करेगा तो solubility भी डिक्रीज करेगी. अब ये जो गैसेस ब्लड के अंदर डिजोल्व हैं, ये एस्केप करेंगे, इनकी सॉलिबिलिटी कम होगी. ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये कंज्यूम हो जाएगा मेटाबॉलिज्म में, लेकिन नाइट्रोजन गैस क्या करेगा, वो ब्लड वेसल से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, एस्केप करने की कोशिश करेगा और इस वॉल्स के ऊपर क्या करेगा, बबल्स का फॉर्मेशन कर देगा. इसी की वजह से क्या हो जाएगा, ये स्कूबा डाइवर्स दे एक्सपीरियंस एक्यूट पेन, इनको एक्यूट पेन मिलेगा. इसी पेन को हम लोग कहते हैं क्या, डिकम्प्रेशन सिकनेस ऑफ द बेड्स, राइट. So this is the application of Henry's law. Now see some questions. इस पे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए. इससे कुछ लिमिटेशंस भी एक तो याद रखिएगा. पहली बात जिस हिसाब से समझिएगा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस और जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए. नेक्स्ट, the molecules of the gases molecules and the solvent molecules, they should not undergo any kind of chemical reaction. इनके बीच में कोई किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए और इसको बहुत हाई प्रेशर पे नहीं होना चाहिए. ठीक है. So these are some limitations of Henry's law. Now see some questions on Henry's law. See, 1 kg of water under a pressure of 1 atm dissolves 0.02 gram of nitrogen at 298 Kelvin. Calculate Henry's law. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है. देखिए, तो आपको पता है अप्लाइड प्रेशर, दिस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन. फ्रॉम हियर कैलकुलेट KH, दिस इज गोइंग टू बी अपॉन मोल फ्रैक्शन. नाउ द प्रेशर इज गिवन, इट इज 1. ये 1 atm दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए आप, इज 1 atm, राइट. नाउ कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. N2 का मोल फ्रैक्शन ये निकाल लेते हैं. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स, इसके हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास. सो मास इज गिवन 0.02 अपॉन मोलर मास इज 28 and here 0.02 upon 28 and plus its mass is 1 kg. 1 kg means it is 1000 gram upon its molar mass.
Now calculate the mole fraction of N2. Now put here, pressure is given 1 atm, calculate KH. Next one, the Henry's law constant for the solubility of nitrogen gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 power 5 atm. Here Henry's law value is given, Henry's law's constant value. The mole fraction of N2 is 0.8. Calculate number of moles. You have to calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. So see, this is the IT question from the 9. Now see here, in this case we have to find out the number of moles of N2. So we have the formula, partial pressure of N2, this is KH into mole fraction of N2. Now first of all we have to calculate the partial pressure of N2. So this is equal to total pressure into mole fraction of N2. So see here, the partial pressure, it is defined as the total pressure into mole fraction. The total pressure here is 5 atm, is given 5 atm, see here. And the mole fraction of nitrogen in here, this is 0.8, is also given, and this becomes 4. So put here, ये मैं मिल चुका है 4. KH value is also given, it is 1 into 10 to the power 5 atm. Calculate X into mole fraction of N2. So this becomes number of moles of N2 upon total moles, number of moles of N2 plus number of moles of S2. This value is 0.8. This is number of moles of N2, यही हमें निकालना है. Number of moles of N2 and plus number of moles of water is given, it is 10. So calculate here number of moles of N2. यहाँ पे सारी values को put up कीजिए, ये सारी values को यहाँ से number of moles of N2 निकाल लीजिए, ठीक है. So these are some questions of Henry's law. इस तरह के questions आपको मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर. इसके एप्लीकेशन को तैयार कीजिए, KH के रिलेशंस को तैयार कीजिए और KH पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं और हेनरीज लॉ के डेफिनेशन को प्रिपेयर कीजिए अपने एग्जाम्स के लिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.